अजय सिंह जी, मैं आपको मंच पे बुलाना चाहूंगा. We would like to present a small token of appreciation to you. डॉक्टर अजय सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स भोपाल. तालियों से इनका स्वागत किया जाए. डॉक्टर अजय सिंह को हम एक भेंट देना चाहेंगे आईटीवी नेटवर्क की तरफ से. ये सुश्रुत अवार्ड्स 2024 में हमारे बीच आए और स्वास्थ्य कॉन्क्लेव में अभी भाग लेंगे अगले सेशन में. डॉक्टर अजय सिंह जी, थैंक यू वेरी मच. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स भोपाल. अब मैं बुलाना चाहूंगा डायरेक्टर एम्स न्यू दिल्ली डॉक्टर एम श्रीनिवास को ऑन स्टेज. डॉक्टर श्रीनिवास, कुड वी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज? डायरेक्टर एम्स न्यू दिल्ली. डॉक्टर श्रीनिवास, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप यहां हमारे बीच आए. एक भेंट हमारे तरफ से डॉक्टर श्रीनिवास को. अब मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे डॉक्टर एनके अरोड़ा को. डॉक्टर एनके अरोड़ा प्रेसिडेंट एम्स देवघर हैं. डॉक्टर अरोड़ा, कुड बी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारे बीच आए. पूरे देश भर से यहाँ चिकित्सक आए हैं, डॉक्टर्स आए हैं और हम उनको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं. और आगे हम इस सेशन में आगे बढ़ेंगे. हमारा सब्जेक्ट है द एम्स अहेड और इस सेशन के खास मेहमान होंगे डॉक्टर प्रोफेसर अजय सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स भोपाल, डॉक्टर वाई.के. गुप्ता, प्रेसिडेंट एम्स जम्मू, प्रोफेसर डॉक्टर एन.के. अरोड़ा, प्रेसिडेंट एम्स देवघर, डॉक्टर एम श्रीनिवास, डायरेक्टर एम्स न्यू दिल्ली. आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ आप स्टेज पर आ जाइए. डॉक्टर अशोक पौराणिक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स गुवाहाटी. और इस सेशन को होस्ट करेंगी देविका चोपड़ा, एसोसिएट न्यूज़ एडिटर, न्यूज़ एक्स. Esteemed doctors of our nation, and the journey of AIIMS also tells a lot about the journey of India. And of course the journey began with Delhi, so I must begin my conversation with Dr. M. Srinivas, who's the director of AIIMS hospitals came up in the country, but now we're on almost a war footing, developing more and more AIIMS across India. Yes, sir. जो प्रोफेसर अरोड़ा ने अभी बोला, मैं उसी की कंटिन्यूटी में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वन ऑफ द मैंडेट ऑफ एनी एम इज टू प्रोड्यूस द एविडेंस. इफ यू आर इंटीग्रेटिंग द मॉडर्न विद द ट्रेडिशनल, and what you said that there are many myths in the community, doctor community, in the general public, then the cause of these misconception is because we were not having any evidences. So we are as AIIMS are there to produce the evidences, to make it scientific, to produce it in front of whole world that these are not just jari booty, but they are really scientifically proven medical elements. Absolutely. At the same time, to continue the conversation with you, you're the executive director of AIIMS Bhopal, and that was one of, like I said, after New Delhi, Bhopal was one of the first batches to come up of AIIMS. But how exactly is there some sort of an assistance or some sort of a model that has been developed by, say, an AIIMS New Delhi or AIIMS Bhopal, which is then being forwarded to some of the other AIIMS that are coming up in terms of administration, in terms of management, in terms of the quality of doctors that is required? देखिए, बेसिकली कोई भी एम्स जो जितने भी नए बन रहे हैं सब ऑटोनॉमस हैं. सब रीजनल इम्बैलेंस को कंप्लीट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए उनको बनाया गया है. तो किसी को भी इक्वेट नहीं करना चाहिए, किसी को भी कॉपी नहीं करना चाहिए. ये मुझे बेसिक फिलॉसफी मुझे ऐसा लगता है एम्स बनाने की नहीं थी कि हम लोग एक ही चीज़ को रेप्लिकेट करते जाएं और बहुत सारे सेम सेंटर बना दें. हमको वन ऑफ द थिंग विच वी शुड एड्रेस इज द लोकल नीड, द रीजनल नीड विच फॉर विच पेशेंट हैज़ टू गो टू दिल्ली, दैट शुड हैज़ टू बी रिड्यूस नाउ. तो उसके लिए हम लोगों को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है. हमें अपने रीजनल जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमें रिकॉग्नाइज करना है
उनकी एक रजिस्ट्री बनानी है, उस पे हम लोगों को एविडेंसेस क्रिएट करना है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ यदि सभी लोग एक ही तरीके का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग पीछे रह जाएंगे। और एक कंसेप्ट जो मुझे लगता है कि एम्स को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, वन स्टेट वन हेल्थ पॉलिसी, जी, एक ऐसी एसओपीज बनाने के लिए जिसको डॉक्टर श्रीनिवास ने भी बोला कि एक ऐसी पॉलिसीज बनाने के लिए जो यूनिफॉर्मली हम लोग ट्रांसलेट कर सकें पेरिफेरी लेवल पे। जो पेशेंट हमारे तक आने में यदि 2 दिन 3 दिन का समय लगता है और उसके पास एसओपीज हैं, तो उस डिले का कोई नुकसान पेशेंट को नहीं होगा। तो दिस इज आई फील वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिसी and the mandate of any of the new aim. So is there then, as you said, you want to now focus more and more on evidence, has the burden on, say, in AIIMS Delhi or some of the other older AIIMS, has that reduced with the number of AIIMS that are growing up, or do we still feel that maybe some of the newer branches still lack in some areas in terms of maybe equipment, facility, expertise, knowledge, that they're not being able to treat, as you said, the bigger diseases that people were coming to an AIIMS New Delhi for? As far as the burden of the patients concerned to the AIIMS Delhi, so I feel that the burden may not be as much as we thought of. Okay. Because it is not because we don't have the equipment, it is not because we don't have the skill, we don't have, I mean, it is not because we don't have the skilled doctors there. It is the brand name of the AIIMS Delhi that is there for so many years. So slowly we are working on that, and Okay. slowly we will try to build our own brand, and Yes. only then the patient will stick to us. And maybe someday people from Delhi might opt to go elsewhere for a treatment as well. It is started happening now. That is possible. So, and hopefully the message also reaches out to people that, you know, it's not just AIIMS Delhi that exists. There are more and more, multiple AIIMS. In fact, we'll soon hit a mark of 25. But